Hello, everyone, and welcome to one more interesting conversation in relation to real estate agent certification examination. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक रियल एस्टेट एजेंट प्रमोटर और लॉटी के बीच में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसलिए रेरा का ये मानना है कि एक रियल एस्टेट एजेंट को ना सिर्फ अपनी रोल्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, बट प्रमोटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रमोटर को किस तरह से प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर, जहां पर आप अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है तो आपको कौन कौन सी प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। So chapter number 6, real estate project registration and promoters responsibility. ये चैप्टर बहुत क्लियरली बताता है दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पहली, प्रमोटर कौन होता है, और दूसरी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को किस तरह से रेरा में डिफाइन किया गया है। अब चूंकि आप रियल एस्टेट एजेंट है, आपको जानना जरूरी है कि प्रमोटर कौन। तो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्टेड एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, और बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अपार्टमेंट। बहुत सिंपल वर्ड्स में हमें यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझना है। The purpose would be selling of some or all the part of the apartments. Similarly, promoter is a person who develops land in a project, whether or not the person also constructs the structures, right? So, दो important person. थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ प्रमोटर में आइडेंटिफाई करी है, एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलॉटीज। ठीक। फोर्थ, एन एपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी भी प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाएगी। फिफ्थ, any person who acts himself as builder, colonizer, contractor, developer, real estate developer, or any other name or claims to act, because आपके पास में पावर ऑफ अटॉर्नी है किसी प्रमोटर की, जिसने आपको राइट दिया है कि हाँ, मेरे बिहाफ पे ये पर्सन एज अ प्रमोटर, एज अ डेवलपर एक्ट कर सकता है। तो अगर आप इन पांच में से किसी भी कैटेगरी में आते हो, और साथ में ये भी कहा है एनी अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, इन 6 पॉइंट्स में काफी क्लियरली डिफाइन किया है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप प्रमोटर कहलाओगे। साथ में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और लास्ट में कंक्लूड किया हुआ है कि प्रमोटर मतलब, एंड इट इंक्लूड्स builder, colonizer, contractor, developer, estate developer, and so on, who are responsible for developing and selling real estate project. Now you would be asking, like, अगर वो develop ही कर रहा है, sell नहीं कर रहा है, तो would he be a promoter? Yes, for sure. Even if he is not developing, but he is selling, he is a real estate developer. Yes, even if he is not selling but developing only, again real estate developer. So अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो भी वो रियल एस्टेट डेवलपर की कैटेगरी, प्रमोटर की कैटेगरी में आएगा, और अगर वो केवल सेल कर रहा है तो भी वो प्रमोटर की कैटेगरी में आएगा, एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द महारेरा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, बट हम क्विकली समराइज करते हैं कि हमने अभी क्या देखा, क्या पढ़ा। तो प्रमोटर की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है, और ये इंक्लूड करती है ना केवल बिल्डर, डेवलपर, कॉलोनाइज, बट जो भी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड कर रहा है तो वो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड, फोकस ऑन डेवलपमेंट। नेक्स्ट फोकस है कि आपका इंटेंशन है सेल करने का किसी अपार्टमेंट को, प्लॉट को या बिल्डिंग को, तो आप प्रमोटर की डेफिनेशन में या कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो क्या वो प्रमोटर कहलाएगा? हाँ। कोई कंस्ट्रक्शन के साथ में अगर डेवलपमेंट भी कर रहा है तो क्या वो प्रमोटर कहलाएगा? हाँ। अगर वो केवल डेवलपमेंट कर रहा है तो क्या वो प्रमोटर कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। साथ में अगर कंस्ट्रक्शन करने वाला बंदा और सेल करने वाला बंदा दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स या दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, तो उस केस में प्रमोटर और वो सेलर की
जॉइंट लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज हैं, 6, 5+1 जो हमने यहाँ पर पढ़ी है प्रमोटर की डेफिनेशन में। अब चलते हैं क्विकली हम प्रमोटर से रिलेटेड एमसीक्यूज की ओर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज अ प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 सेट के ऑफ द माहेरा एक्ट? पहला बिल्डर, दूसरा कॉलोनाइजर, थर्ड आर्किटेक्ट, फोर्थ डेवलपर। अब आप बताइए कौन सा पर्सन, कौन सा एंटिटी डिफाइन नहीं है एज पर द प्रमोटर की डेफिनेशन में? सो द करेक्ट आंसर इज आर्किटेक्ट, बिकॉज आर्किटेक्ट को ही हम मेंशन नहीं किया गया है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पॉइंट इज who among the following would not be considered as a promoter under the definition? First, a person who constructs a building to sell individual apartments. Second, a land developer who sells the plots without any consideration. Third, a government authority selling apartments in a building it constructed. And fourth, homeowner selling their own self-built house. तो आपको बताना है इन चारों कैटेगरी में से कौन सा पर्सन या कौन सा इंडिविजुअल या कौन सी एंटिटी प्रमोटर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो आंसर काफी क्लियर है। आंसर इज डी, because a homeowner selling his own self-built house would not be considered in the given category. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। If a person constructs a building and another person sells the apartment, who is liable under the act? केवल seller, केवल constructor, both constructor and seller jointly, and third, fourth, neither the constructor nor the seller. तो इस केस में कौन लायबल होगा? बहुत क्लियर है। Correct answer is C, both the constructor and seller jointly. I hope you are getting great insights from this video. Do subscribe the channel and do hit the like button. Now, let's get into the next part. Which of the following is not a key characteristic of a promoter as per the definition of the act? Intention to sell the real estate unit, involvement in construction or development activities, holding a valid license, that is the real estate license, and potential for joint liability with other parties. अब आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा पॉइंट बताता है कि वो प्रमोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है एज पर डेफिनेशन? सो द करेक्ट आंसर इज सी, holding a valid real estate license doesn't make any difference. The next question which we have right now is a person who develops land or sale, a person who develops land for sale and then constructs buildings on some plots would be considered as what? Only builder, only developer, both builder and developer, neither the builder and developer. So what is the correct answer? The correct answer is C. He would be considered a builder as well as a developer. So I hope this is making sense for you, right? So quickly summarize your top 5 points in relation to the definition of promoter in the comment box. I'll be waiting for that. I'll pause for a minute here. So I hope that you have definitely mentioned the key top learnings in relation to the definition of promoter. Don't go to the next part unless and until you complete this part. Now let's get into the next part. I hope you have done this. Okay. So the next part is understanding the real estate project. Now, when you go to the definition of MAHA, see, real estate project is defined as per section 2ZN, and it is mentioned that real estate project means the development of a building or building consists of apartments, converting an existing building or part thereof into apartment. राइट सो काफी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। सो हियर वी गो। द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग, अपार्टमेंट और अदरवाइज, कन्वर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इनटू अपार्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स। बहुत ही बारीकी से बताया है कि अगर आप लैंड को भी प्लॉट में कन्वर्ट करते हो तो वो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट माना जाएगा। द पर्पस मस्ट बी व्हाट? अगेन, इंटेंशन, इंटेंशन
आप ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका इंटेंशन है उस अपार्टमेंट को, उस प्लॉट को, उस बिल्डिंग को सेल करने का, या उससे जुड़े हुए कुछ प्लॉट्स को या कुछ अपार्टमेंट्स को भी अगर सेल करने का आपका इंटेंशन है, तो आप वहां पर उस को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की डेफिनेशन की कैटेगरी में डालोगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हो जाता है कि प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स भी यहाँ इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इट एनकम्पासेस द कॉमन एरियाज, डेवलपमेंट वर्क, इम्प्रूवमेंट, स्ट्रक्चर्स, easements, rights, and related other thing related to the project. से फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ परमिट्स लिया, आपने कुछ अप्रूवल्स लिए, अगर आपने ड्रेनेज फैसिलिटी या स्विंग फैसिलिटीज के लिए अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम किया, तो उन सब कैटेगरी के अंदर भी वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आ जाएगा। इट कवर्स बोथ द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कवर नहीं हुए, बट रेजिडेंशियल या कमर्शियल या दोनों। सो तीन कैटेगरी यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई है। व्हाट वुड बी द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लुक लाइक एज पर द महारेरा एक्ट। सो लेट्स गेट इनटू द एमसीक्यू, but before that, subscribe the channel. So let's get into the first part. Under the Act's definition of real estate project, which of the following activities would not be considered as a project? So you have four options. Converting a commercial office building into individual office units for sale. Second, developing a new residential apartment complex for sale. Subdividing a large parcel of land into smaller plots for residential construction. And the fourth part is renovating a single family house for the owner's personal use. Now, again revisits the question, what, as per the definition of the real estate project, is not considered under the definition of project? So, when you have a when you're converting a commercial office building into an individual office unit for sale, the intention is for sale. So it is covered. Developing a new residential apartment complex for sale, again it is covered. Though it is residential or commercial, doesn't make difference. You divide a large parcel of land into plots for residential construction, again it is covered. So bacha kya hai? Bacha hai renovating a single family house for the owner's personal use. And that's why it's the correct answer that it is not covered under the definition of project. Next part, a developer plans to build a mixed-use project with residential apartments on one side and commercial shops on the other side. Would this project fall under the definition of the real estate project? So, थोड़ा सा tricky है, but let's try to understand. Yes, as it involves the development of both apartments and commercial spaces for sale. No, as the project involves mixed use development. Yes, but only for the residential portion. And no, as it doesn't solely focus on the residential units. तो चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से आपको समझना है, पिकअप करना है. Would this project fall under the definition of the real estate project? Right? A developer plans to build a mixed-use project with residential apartment on one side and commercial shops on the other side. तो कई बार हमें क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़ना पड़ सकता है अगर क्लैरिटी नहीं आती है. No harm in reading twice, right? So what's the correct answer? The correct answer is yes, for sure, as it involves the development of both apartments and commercial spaces for sale, it would be a real estate project. So I believe that this definition of real estate project is very clear to you. If you want to get into the next part, that is the registration of the real estate project, what are the responsibilities of promoter and what is the relevant content of chapter number 6, then do get into the next video. Till that, stay tuned. Bye.